रसापकर्षका दोषाः रस्यन्त आस्वाद्यन्त इति रसाः रसानां रसभाषादीनाम् आस्वादविषयाणाम् अपकर्षकाः तदनुभूतो विघ्नस्वरूपाः दोषा इति दोषलक्षणम्। ते पुनः पंचदा मता पदे तदंसे वाक्यार्थे संभवन्ति रसेऽपि यत् स्पष्टं दुस्रवो त्रिविधमश्लीलानुचितार्थ प्रयुक्ताः ग्राम्या प्रतीतसंदिग्धा नेयार्थ निहितार्थता अवाचकत्वं क्लिष्टत्वं वृद्धमतिकारिता अविमृष्ट विधेयांसा भावश्च पदवाक्ययो दोषाः केचित् भवन्त्येषु पदांसेऽपि पदे परे निरर्थका समर्थत्वे च्युत संस्कारता यथा। दुस्वभाव तीन प्रकार की अश्लीलता अनुचितार्थता अप्रयुक्तता ग्राम्यता अप्रीतता संदिग्धता नियार्थता निहितार्थता अवाचकत्व क्लिष्टत्व वृद्धमतिकारिता पदगत और वाक्यगत अविमृष्ट विधियांसत्व। इन दोषों में से कुछ दोष पदांश में भी रहते हैं परंतु निरर्थकत्व असमर्थत्व और च्युत संस्कारत्व ये तीन दोष पद में ही रहते हैं। परुषवर्णतया श्रुति दुःखावहत्वं दुस्रवत्वं परुषवर्णतया कठोराक्षरत्वेन श्रुति दुःखावहत्वं कर्णाधारत्वेनात्मनि दुःखाघायकत्वं दुस्रवत्वं कठोर वर्ण होने से कर्णों में दुख उत्पन्न करने वाले को दुस्रव कहते हैं। जैसे कार्तर्थ्य या तो तन्मंगी कदा नंगवसन्वदा अत्र कार्तर्थ्य शब्दस्य परुषवर्णतया प्रकृति सिंगार रस व्यंजकत्वात् भावाच्छ्रुति दुःखावहत्वात् दुस्रवत्वम कामदेव की अधीन होकर कृषांगी कब कृतार्थ भाव को प्राप्त होगी। परुषवर्णतया श्रुति दुःखावहत्वम दुस्रवत्वम कठोराक्षरत्वेन कर्णाधारत्वेन आत्मनि दुःखाघायत्वम दुस्रवत्वम यथा कार्तर्थ्य या तो तन्वंगी कदानंग विसन्वता अत्र कार्तर्थ्य शब्दस्य परुषवर्णतया प्रकृति सिंगार रस व्यंजकत्वा भावाच्छ्रुति दुःखावहत्वात् दुस्रवत्वं त्रिविधा अश्लीला अश्लीलत्वं व्रीडा जुगुप्सा मंगल व्यंजकत्वात् त्रिविधं क्रमेणोदाहरणं व्रीडा दीप्तारि विजये राजन साधनं सुमहत्तवा हे राजन दीप्तारि विजये तव सुमत्त साधनं सेनाद्युपकरणम् अत्र साध्यते प्रतिकीडा अनेनेति व्युत्पत्त्या साधनपदस्य मेढव्यंजकत्वेनाश्लीलत्वं जुगुप्सा प्रसराय शनैर्वायु विनाशे तन्वी ते तदा हे तन्वी तस्मिन् काले तव विनाशे अदर्शने सति वायुः मन्दं प्रसृतो बभूव। अत्र प्रथम चरणे प्रयुक्तस्य वायु शब्दस्यापानवायुव्यंजकत्वेन जुगुप्सा व्यञ्जनमश्लीलत्वम् एवं च द्वितीयचरणे प्रयुक्ताद्विनाशशब्दानां मरणरूपस्यामङ्गलार्थस्य प्रतीते रमङ्गलव्यञ्जकमश्लीलत्वम् अनुचितार्थ सूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे अयोग्यार्थव्यञ्जकत्वमनुचितार्थत्वं तद्यथा शूरा वीराः नाध्वरे युद्धयज्ञे पशुभूताः अमरतां देवभावं यान्ति गच्छन्ति। अत्र यथा धर्मयुद्धे हताः शूराः या आवृतेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङ्गमुखाः परमत्र शूराणाम् उपमानभूतानां पशूनां कातरत्वेन शूराणां कातर्यमभिव्यनक्तीत्यनुचितार्थत्वम् अप्रयुक्तं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वं तेन प्रकारेण प्रसिद्धो सत्यमपि कविभिः अनादृतत्वं तिरस्कृतत्वं यथा भाति पद्मसरोवरे। अत्र पद्मशब्दः पुल्लिङ्ग अस्मिन्वाक्ये पद्मशब्दः पुल्लिङ्गः अयं भावः वा पुंसि पद्यं नलिनम् इति कोशानुशासनतः पद्यशब्दस्य वैकल्पिकपुंलिङ्गत्वेऽपि कवया पद्यशब्दं पुल्लिङ्ग एव प्रयुज्यते अतोऽस्य पुल्लिङ्गप्रयोगस्य कविभिरनादृतत्वात् प्रयुक्तम्। ग्राम्यत्वं यथा कटिस्थे हृते मना ग्रामीण प्रयोजकत्वं ग्राम्यत्वम् अत्र विदग्धा नितम्बशब्दं प्रयुञ्जते न तु कटिशब्दं ग्रामीण प्रयोजकत्वात् ग्राम्यत्वात् अत्र कटिशब्दो ग्राम्य प्रतीतत्व अप्रतीतत्वमेकदेशमात्र प्रसिद्धं मेकदेशमात्र प्रसिद्धत्वमप्रतीतत्वम् एकशास्त्रमात्रे प्रसिद्धत्वं यथा योगेन दलिताशया योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन दलिताशया दलिता निवारिता आशया वासना यशेषा। अत्र आशय शब्द वासना विधेया योगशास्त्रे तरलक्ष्ये विद्वांसाभिप्रायश्छन्दा आशय इति
कोशानुशासनात् आशय शब्द अभिप्राय रूपे अर्थे प्रयुञ्जते अतो अतोत्रा प्रतितत्वं दोषा संदिग्ध आशी परंपरा मध्यम करने कृत्वा कृपां कुरु कस्यचित् पुरुषस्य कंचित् प्रवों प्रत्युक्तिरियं हे प्रभो वन्द्यां वन्दनीयाम् आशीः परंपराम् आशीर्वाद पंक्ति कर्णे कृत्वा श्रुत्वेति भावा कृपां दयां कुरु विदेहि अत्र वन्द्यामिति किं वन्दे भूतायामुत वन्दनीयामिति संदेह अत्र उदाहरणे वन्द्यामिति वयोरवेदबुद्धेः किं वन्दी भूतायाम् इति सप्तम्यन्तपदस्य उत अथवा वन्दनीयामिति द्वितीयान्तपदस्य इति संदेहः नेयार्थत्वं रूढिप्रयोजना भावात् शक्तिकृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनं रूढिप्रयोजनयोः अभावात् कवेरसामर्थ्यप्रयुक्तं लक्ष्यार्थस्य लक्षणाप्रतिपाद्यर्थस्य प्रकाशनं भावात् तत्नेयार्थत्वं नामदोषः यथा कमले चरणाघातं मुखं सुमुखी ते करोत् अत्र इह पद्यार्थे पादप्रहारेण निर्जित्वं कमलस्य सुन्दरी मुखकर्तिकं पराजित्वं लक्ष्यार्थः अत्र मुखस्य चरणाभावात् तदाघाता संभवेन मुख्यार्थबाधः ततश्च लक्षणायां रूढिप्रयोजनात् रसान्नेयार्थत्वं नियतार्थत्वं निहितार्थत्वमुभयार्थस्य शब्दस्य प्रसिद्धर्थे प्रयोगः प्रसिद्धोभयार्थवाचकस्य शब्दपदस्य प्रसिद्धरहिते अर्थे प्रयोगे निहितार्थत्वं यथा युम्ना संबरमंबरं व्यतानीत कालिंदी जलम आकाशं व्याप्तवान् संबर शब्दः संबरं सलीले पुंसी मृगदैत्य विशेषयो इति कोशानुशासनात् उभयार्थ कोऽपि दैत्ये प्रसिद्ध इह तु अस्मिन्नुदाहरणे तु जले निहितार्थता अवाचक गीतेषु कर्णमादत्ते अभीष्टार्था नवबोधकत्वामवाचकत्वं गीतेषु गानेषु कर्ण उत्तरम् आदत्ते गृह्णाति अत्रांग पूर्वो दाएं धातुर्दानार्थे वाचकः अत्र वक्तुम् आदत्त इति पदस्य दातातीत्ययमर्थोऽभीष्टः परम् अत्र आंग पूर्वो डू दाएं धातुर्दानार्थे वाचकः यथा वा दिनं मे त्वयि सम्प्राप्ते ध्वानच्छन्नापि यामिनी अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थे वाचकं पदसमासगतदोषा क्लिष्टत्वमर्थप्रतीतरव्यवहितत्वम् क्षीरोदजा वसति जन्म भुवा प्रसन्ना अत्र क्षीरोदया लक्ष्मीस्तस्य वसति पद्मं तस्य जन्मवो जलानि विरुद्धमतिकार भूतेस्तु भवानी सा भवानीशा शब्दार्थ भवान्याः प्रतीति कार्यति अतः अत्र विरुद्धमतिकारिता जायते अविमृष्टविधेयांसत्व स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन् ऋतोच्छुने किमेभिर्भुजे वाक्ये यत्र उद्देश्य विधेयो पौर्वापर्यव्यतिक्रमस्तत्र वाक्यगतं समासे यत्र तादृशो व्यतिक्रमस्तत्र पदगतमविमृष्टविधेयांसत्वं पदगताविमृष्टविधेयांसस्योदाहरणं रामकर्तिक राक्षसविनाशेन निर्विण्णस्य रावणस्योक्तिरियं स्वर्ग एव ग्रामटिका क्षुद्रग्रामः तस्याः विधुर्नमं तेन व्यर्थस्पीते एभिः समीपतर्वर्तिभिः बाहुभिः विंशति संख्यके भारभूतेरिति शेषः किं फलमिति भावा अत्र यथात्वं विधेयं तच्च समासे अप्रधानत्वात् अनुवाद्यत्वस्य प्रतीतिकृत यथा वा रक्षांस पापी पुरस्तातु मलं रामानुजस्य मे अत्र रामस्येति भावा अत्र दुष्प्रसह राक्षसानां विनाशे रामः प्रसिद्ध परं रामस्यांगजस्यापि मेघ्रतः स्थातुं राक्षसाः समर्था भवेयुः इति रामसम्बद्धित्वाल्लक्ष्मणस्य दर्पा
न खलु केवलस्य लक्ष्मणस्य मुख्यता किन्तु रामसम्बन्धिर इति भावः। समासेन अयमर्थ न संगच्छते तो रामस्येति वाच्यं। यथा वा आसमुद्रक्षितिसानाम् अत्र समुद्रमिति वाच्यम्। अत्र समासकरणे तदर्थानवगतेर्दोषा इति भावः। यथा वा यत्र ते पतति शुभ्रो कटाक्ष षष्ठबाण इव पंचसा अत्र षष्ठ इवेत्युत्प्रेक्ष्यम्। अत्र षष्ठत्वमुत्प्रेक्ष्य विधेयं च समासेन तत् प्रधान्यानवगम दोषा इति भावः। एवं चात्र शुभ्रू इत्यत्र नेयडुवङ्गस्थानावस्त्रेति नदी संज्ञायां निषेधात् अम्बार्थ नद्योर्ह्रस्व इत्यनेन वाक्ये दुष्टवत्वं यथा स्मरात्यन्धः कदा लप्से कार्थार्थ्यविरे तव कश्चिन्नायको नायिकां कथयति हे प्रिये तव वियोगो स्मरात्यन्धः कामस्य या अतिपीडा तया अंधः। जुगुप्सा व्यञ्जिकामश्लीलता मुदाहरति अत्र कृतप्रवृत्तिरन्यार्थे कविर्वान्ता रामस्नुते। वाक्यकथां नियार्थतामुदाहरति उद्यत्कमललौहित्यैर्वक्राभिभूषिता तनु। वाक्यकथं क्लिष्टमुदाहरति धम्मिल्लस्य नकस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरंग सवाक्ष्य। पदांसे दूसरोक्तम यथा तद्गच्छसिद्धया पदांसे निर्धार्थत्वमुदाहरति धातुमत्तां गिरिर्धत्ते। पदांसे वाचकत्वमुदाहरति वर्ण्यते किं महासेनो विजयस्य तारका। पदांसजातमश्लीलत्वं पाणिपल्लवपेलवः। पदांसगतं नियार्थत्वमुदाहरति संग्रामे नीताः सूरा वचो बाणत्वमागता। पदमात्रगतं सामर्थ्यत्वकुंजं हन्तिकृशोदरी। वर्णानां प्रतिकूलत्वं लुप्तहता विसर्गते अधिक न्यून कथित पदता हर्तवृत्तता पदप्रकर्षता छंदो विश्लेषाश्लील कष्टता अर्धांतरैकपदता समाप्त पुनरात्तता अभवन्मत संबंधा क्रमा मतपरार्थता वाच्यस्य न विधानं च भग्न प्रक्रमता तथा त्यागा प्रसिद्ध रस्थाने न्यासा पदसमाशयो संकीर्णता गर्भितया दोषा स्युर्वाक्यमात्रगा। लुप्त विसर्गा गता निशा इमा बाले। आहत विसर्ग आहता उत्तम धीरो वरो नरो याति। अधिक पदत्व दोषा पल्लवाकृतिरक्तुष्टि सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिं कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणे इति त वाचमुवाचकोत्स त उवाच मुद्रां वाचम् इति न्यून यदि मय्यार्पिता दृष्टि किं ममेन्द्रतया तदा पुनरुक्त्याभावेऽपि द्विप्रयुक्तपदत्वं कथितपदत्वं रतिलीलाश्रमं भित्ते सशीलं मलिनो वहन् एवं चक्षुर्विषं धृतपरिस्फुटतत्प्रसूना। रसदोषा सोदाहरण स्फुटे क्रियन्ताम्। रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायी संचारिणोऽपि परिपन्थिन सांगस्य विवावादे परिग्रह आक्षेपा कल्पिता कृच्छा धनुभाव विभावयो कांडे प्रथनच्छेदो तथा दीप्तिः पुनः पुनः अंगिनो ननुसंधान मनंगस्य च कीर्तनम् अतिविस्तृतिरंगस्य प्रकृतीनां विपर्यया अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मता। रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायी संचारिणोऽपि परिपन्थिन सांगस्य विवावादि परिग्रह आक्षेपा कल्पिता कृच्छा धनुभाव विभावयो
अकाण्डे प्रतनच्छेदो तथा दीप्ति पुनः पुनः अंगिनो ननुसंधान मनंगस्य च कीर्तनम अतिवृस्थिति रंगस्य प्रकृतीनां विपर्यया अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषारस्कता मता तामुद्दीक्षा कुरंगाक्षी रसो न कोप्य जायता चंद्रमंडलमालोक्य सिंगारे मग्नमंतरम स्वशब्देन स्थायी भाव से स्वशब्दवाच्यत्वम् अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे विविचार भावस्य शब्दवाच्यत्वं यथा जाता लज्जावती मुग्धा प्रिय परिचुम्बने अत्र लज्जा शब्दोपादानात् व्यभिचारी भावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं दोषा परिपंथी रसांग विभाव परिग्रहो यथा मानं मा कुरु तन्वंगी ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम् अत्र यौवनास्थैर्या निवेदं सिंगाररसस्य परिपंथिना शान्तरसस्याङ्गं शास्तस्येव च विभाव इति सिंगारे तत्परिग्रहो न युक्ता दोष एवेत्यर्थः कष्टाक्षिप्तानुभावत्वं दोषो यथा धवलयति शिशिर रोचिषि लोकलोचनानन्दे ईशित क्षिप्त कटाक्षा स्मरेण मुखी सा निरीक्षितां तन्वी कष्टाक्षिप्त विभावत्वं यथा परिहरते रतिमति लूनिते स्खलिततरां परिवर्तते च भूय इति बत विस्मादशास्य देहं परिभवति प्रसवं किमत्र कूर्मा आटे अकाण्डे रसप्रथनं यथा वेणीसंगारे द्वितीयंके वर्तमानानेकवीरसञ्चये काले दुर्योधनस्य भानुमत्या स सिंगारप्रथनम् अकाण्डे रसच्छेदो यथा वीरचरिते राघव भार्गवयो धारादिरूढेऽन्योन्यसंरम्भे कंकणमोचनाय गच्छामीति राघवस्योक्ति पुनः पुनः रसोदीप्तिर्यथा कुमारसंभवे रतिविलापे अंगिरोऽनुसन्धानं यथा रत्नावल्यं चतुर्थंके वा भ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृति अनंगस्य कीर्तनं यथा कर्पूरमञ्जर्यां राजनायिकयो स्वयंकृतं वसन्तस्य वर्णनमनादृत्य वन्दिवर्णितस्य प्रशंसम् अंगस्यातिविस्तृतिर्यथा किराते सुरांगना विलासादि प्रकृते विपर्यय मुदा हर्तुमाः प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्या दिव्याश्च तेषां धीरोदात्ता दिता तेषामप्युत्तमा धममध्यमत्वं तेषु च यो यथा भूतस्तस्या यथा वर्णने प्रकृति विपर्ययो दोषा यथा धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धत्तवच्छत्मना बालिवदा यथा वा कुमारसंभवे उत्तम देवतयो पार्वती परमेश्वरयोः संभोगसिंगारवर्णनम् इदं पित्रोः संभोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम् इति काव्यप्रकाशकारा आहुः अन्यतनौचित्यं देशकालादिमन्यथा यद्वर्णनं तथा सति हे काव्यस्यासत्यता प्रतिभासेन विनेया नामुन्मुखीकारा संभवः अर्थदोषा अपृष्ट दुष्कर्मा ग्राम्या व्याहता श्लील कष्टता अनवीकृत निर्हेतुर्प्रकाशित विरुद्धता संदिग्ध पुनरुक्तत्वे ख्याति विद्यारुद्धते सकांक्षता सहचरा भिन्नता स्थानयुक्तता अविशेषे विशेषाश्चानियमे नियमस्तथा तयोर्विपर्ययो विद्यानुवादा युक्तते तथा निर्मुक्त पुनरुक्तत्वा मर्थदोषा प्रकीर्तिता ग्राम्य स्वपि ही त्वं समीपे में स्वपिम्येवाधुना प्रिये अश्लील हन्तु मेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणा यथा सुजायते पातो न तथा पुनरुन्नति दुष्क्रमता मुदाहरति देहि मे वाजिनं राजन् गजेन्द्रं वा मदालशम् कष्टता मुदाहरति वर्षत्ये तदहरपतिर्न तु घनो धामस्थमच्छम्पया सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित् पूरो यया प्लावितः व्यासाशोक्तिषु विश्वसित्यपि न कः श्रद्धानकस्यो श्रुतो न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिस्वपा संदिग्धत्वमुद अचला अबला वास्यु सेव्या ब्रूतमनीषिणा
दुष्कृतं देहि मे वाजिनं राजन् गजेन्द्रं वा मदालसन्तु मे प्रवृत्तिस्तस्य विवरेषिणा सा सुजायते पातो न तथा पुनरुन्नति। वाक्य स्वरूप महावाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा पदाशक्ति पदोच्चया। योग्यताकांक्षा सत्ययुक्ता पदोच्चयो वाक्यम स्यात् पदार्थानां परस्पर संबंधे प्रतिबंधाभावो योग्यता यथा वनिना सिंचे इत्यपि वाक्यम स्यात्। आकांक्षेति प्रतीतिर्पर्यवसान विरह आकांक्षेति पदसमूह श्रवणानन्तरमपि यत्र श्रोतुर्जिज्ञासा विद्यते तत्र आकांक्षा स यथा घटा 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 भावा भावः घटा भावा भावा घटो भावरूपो भवति तथैव साकांक्षापि भावरूपैव निराकांक्षस्य वाक्यत्वे अभ्युपगते गौरस्व पुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि पदानां वाक्यं स्यात्। अयं भावः गौरस्व पुरुषो हस्तीत्यत्र आकांक्षाया अभावेन न वाक्यत्वम् आसक्ति बुद्धिर्विच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात् परं तत्र बुद्धिविच्छेदेन वाक्यत्वं न भवति। वाक्योच्चये महावाक्यम् इत्थं वाक्यं द्विधा इत्थमिति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च।